everyone, welcome to the morning session. I hope you all can hear me and see me clearly. Thank you for the confirmation, everyone. Good morning, good morning. We'll start the session in next 2 minutes. Sir, I've sent you an invite to join the stage. Please accept that. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, sir. We'll start in next 2 minutes. Meanwhile, you can set up your screen and be ready for the session. Good morning, everyone. Welcome to the morning session. Today we have a Nifty expiry as it is Thursday. And tomorrow we have a knowledge session where we'll teach you option strategies, advanced option strategies at 4 p.m. with our expert, Mr. Arpit Beriwal. So don't forget to join these sessions. For the today's morning session, we have Mr. Madhur Mundada with us, who will be taking us through the market outlook and the important events, support resistance of the indices, and then we'll move towards the stock queries. And meanwhile, we'll share some, try our best for some profitable intraday conviction delivery. And I can see questions are coming in. So जितने डिटेल आपके क्वेश्चन होंगे उतने डिटेल्ड हमारे आंसर होंगे. So please feel free to uh, ask as many questions as you want. We'll try our best to answer all of them. एंड जैसे कि अनिल जी ने इफ आई गिव एन एग्जांपल उन्होंने 4-5 क्वेरीज एक साथ दी है तो विल ट्राई टू टेक अप ऑल ऑफ देम बट वील एंश्योर कि वील टेक एटलीस्ट वन क्वेरी पर पर्सन. So Madhur sir, you can turn on the camera, share the screen, and then we are good to go. Your screen is visible, sir. You are also visible, and you can start the session. Yes. So very good morning, everyone. Welcome back to the morning session. So today we have the Nifty right, and this is a daily chart. Nifty formed a inside bar kind of pattern on a daily chart. And 2 days back, we have seen some massive sell off in the Nifty as index was down by more than 1.3% and form a bearish engulfing, but took a support around 23,000 level. And as of now, we are just 100 point up from the 23,000 level. But again, the view is bearish in the Nifty as well as Bank Nifty because some profit booking seen in the major uh, Reliance or other heavyweights counter. The only frontline two stocks, that is Bajaj Twins, Bajaj Finance, and Bajaj Finserv, are holding the gains for last almost 5 to 7 trading session. So let's talk about the Nifty level first, and then we'll go further. So talking about the yesterday, Nifty opened on a positive note, but gave up the strain from the second hour itself, which was followed up some recovery in the next half. We have seen some kind of short covering trigger in the last 1 hour play because of the SD scandal. Nifty is small but side bar on the daily chart, and now till it holds below 23 200 23 250 level, we can see some more profit booking towards 22 950 and then 22 800 zone, right? And ऊपर में 23 250 and then 23 333 is the level. So 23 250 is the immediate hurdle, and then 23 333. And talking about the support, as I said, 22 950 and then 22 800. India VIX is hovering near 17, and that's why some volatility is seen in the index. So you can see the VIX chart is hovering near 17 level. It may go towards 2022 level because the budget is there in next few days.
right? First wave ko budget hai, and that's why we see some volatile swings in the index as well. So let's talk about the bank nifty now. So bank nifty again the levels are showing that we can see some more profit booking towards 48,000, 750 level, because some heavyweights private bank are not doing well, right? You can see एचडीएफसी बैंक में हमने कल थोड़ा सा ट्रिगर देखा था बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, बट स्टिल फॉलो बाइंग उसमें नहीं देखने मिल रही है. You can see the Axis Bank, even the ICICI Bank, we have seen some good correction from the upper levels from last couple of sessions. So Bank Nifty, we can immediate support is seen at 48,000, then 47,750 level, while the hurdles are placed at 48,900 and then 50,250 level. Sorry, 49,900 and then 49,250 level. So Bank Nifty immediate resistance around 49,000, then 49,250, while the support are seen at 48,000 and then 47,750. But as per my experience, in the falling market, don't look at the support, look at the resistance. Because जब resistance पे आता है, try to sell there. So in falling market, don't look at the support, because no, सपोर्ट कुछ काम ही नहीं कर रहा है. यू कैन सी कि निफ्टी में कोई सपोर्ट्स थे, वो वहां से तुरंत हमें सेलिंग देखने मिली है. हल्का सा बाउंस आता है सपोर्ट पे एंड वहां से फिर से हमने सेलिंग देखने मिलती है. सो इन फॉलिंग मार्केट डोंट लुक एट द सपोर्ट, लुक एट द रेजिस्टेंस, राइट? So as I said, we have seen some good action in the Bajaj Twins. You can see कि इंडेक्स में काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला है, बट बजाज फिनसर्व दोनों में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है अभी भी. Even a couple of sessions back, we initiated the call on the Bajaj Finance and Bajaj Finserv as well for the delivery purpose, right? Again, no, the sector which looks good, that is Nifty IT. Index is correcting from the upper levels, but Nifty IT you can see holding its gain. Even today's index up by more than 1.5%. Even yesterday it was up by more than 2%. काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है हमें. Look at the TCS, Infosys, even the TechM. काफी अच्छा यहाँ पे हमें बाइंग देखने मिल रही है IT counters में. And for next couple of months, you can hold the IT counters, right? So one stock looks good for the intraday, that is a Naukri. In trading at the 7,400 level with a stop loss of 7,350, ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 7,460 के टारगेट आना चाहिए. So 7,350 will be ऊपर में 7,460, 7,470 will be the target. Yes, Sir, Anuj, I'm now just we can. repeating the trade. Yes, Naukri buying at 7415, stop loss 7350, target 7460. yes. Sir, your view on Alco for swing? Okay. So before that, one stock looks good for even delivery purpose. It is MCX. Couple of session back on the Tuesday, we have seen some selling in the MCX. It was down by more than 8% because of the result. But again, support से काफी अच्छा बाइंग देखने मिली है, right? Trend line support से फिर से reversal देखने मिला है. So one can go long on the MCX for upside target towards 6,100, 6,200, right? Delivery के लिए आप MCX buy कर सकते हो. Yes, Anuj, we can continue the queries now.
weekly chart and forming a lower top, lower bottom on a bigger time frames, indicating the chart is weak, right? Seen some up move from the lower levels, but as of now, not much momentum expected. The momentum we can expect above 220 level till it till वो एक रेंज में ही ट्रेड होते नजर आएगा हमें. नीचे मैं सपोर्ट की बात करूं तो Sir, max health quantity 50 at 1223.77. quantity 50 at 1223. बहुत बड़ा इसमें करेक्शन देखने नहीं मिला है. दो ऊपर के लेवल से थोड़ा सा हमने करेक्शन देखने मिला है, बट अगर अदर स्टॉक से कंपेयर करें तो इसमें इतना सेलिंग देखने नहीं मिली है. तो एक 1000 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. इफ इट क्लोजेस बिलो 1000 लेवल देन इट्स बेटर टू एग्जिट, बट इट्स एबल टू होल्ड द 1000 लेवल. यू कैन सी द अप मूव टुवर्ड्स 1200 and then 1250 for incoming session. Sir, just curious to know how you decide which share is long term or swing we should go. Right, for the long term purpose you can see the weekly chart, right? वीकली चार्ट में अगर काफी अच्छा हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो वहां पे आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो. फॉर गोइंग एट द इंट्राडे पर्पस यू कैन सी द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स लाइक 15 मिनट और डेली चार्ट और 30 मिनट आवरली चार्ट फॉर द इंट्राडे. बट अगर वीकली या मंथली में ब्रेकआउट हो रहा है कोई स्टॉक का देन वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, बिकॉज उसके टारगेट्स बड़े आते हैं. तो इन बिटवीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक्स, बट जो बड़े टारगेट है वो वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे देख के ही होता है. सो फॉर गोइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू यू कैन सी द वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट. Sir, Bajaj Finserv 1740 call at 29. राइट, सो ऑलरेडी आई डिस्कस द बजाज फिनसर्व, बट सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है. एक रेंज ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है एंड इवन द मार्केट के फॉल के बाद भी इसमें गिरावट देखने नहीं मिली हमें. ऊपर के लेवल में होल्ड हो रहा है अभी भी. सो ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 1780 and if it crosses that then it can touch towards 1800. So you can hold the call, but please also maintain the stop loss. Yeah, shift to the cost because expiry is near in just 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन आर लेफ्ट इन द जनवरी सीरीज. सो वहां पे टाइम देखिए आपको देखने मिल सकता है. सो मोमेंटम में अगर स्टॉक आता है तो बेटर आप प्रॉफिट बुक करते चले. Yes, Piyush, we have a commodity session today, as we mentioned before. Harsh sir will be taking the natural gas pre-expiry today, and tomorrow we have natural gas expiry session at 6 p.m. with Ashish Jajodia, sir. Coming back to the queries, sir, do we have any strikes on radar for Nifty? Just I'm checking the. So before that, one more stock on the radar for the intraday is a persistent. So as I said, Nifty IT is showing a superb strength, and that's why we are seeing some bounce back in the Nifty as well. So persistence on the radar. Stock is already up by more than 8%, but still we are seeing that some more up move in the stock. Right now trading at the 6150 with a stop loss of 6100 for the upside target of 6220. The 6100 will be the stop loss for the upside target of 6220. यहाँ से 50-60 पॉइंट का आपको हमें लगता है इसमें. स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी में काफी स्ट्रेंथ है. 8-9%. Even the persistence is up by 8%, and the frontline stocks are doing very nice. TCS, Infosys, SCL Tech Mahindra. But a few minutes back, we are initiated
एंड एक उसमें भी काफी एक 15-20 पॉइंट का मोमेंटम देखने मिला है, राइट. इट मेड अ हाई टुवर्ड्स 7487. तो इन्फो एज में भी हमें एक 20-25 पॉइंट का स्विंग देखने मिला है. तो यू कैन स्टार्ट बुकिंग इन द प्रॉफिट इन इन्फो एज एज वेल, ट्रेडिंग एट द डे हाई. So ICICI Bank. So setup wise, weak लग रहा है स्ट्रक्चर इसका. Even stock has broken its 200 demo on daily chart as well. So and forming a low top lower bottom since last couple of session. So setup wise weak है, right? And that's why Bank Nifty is not also doing much well. So talking about the immediate support, it has a supports towards 1160 level, right? Stock may see some profit booking towards 1160, and then it can resume its bounce back. So ऊपर की अगर बात करूं तो इमीडिएट में रेजिस्टेंस है 12 से 20 के आसपास. 12 से 20 से वापस इसमें सीलिंग देखने मिल सकती है. सो एज ऑफ नो रेंज में है, कोई खास मोमेंटम इसमें है नहीं. सो क्विक अपडेट ऑन द इन्फो एज. जो टारगेट था हमारा हिट हो गया है. वी कैन बुक द प्रॉफिट इन द नौकरी. इंट्राडे का टारगेट था वो हिट हुआ है. सो यू कैन बुक द प्रॉफिट इन द इन्फो एज. इन्फो एज दैट इज नौकरी, जो भी उसका नाम है. सो यू कैन बुक द प्रॉफिट. Sir, we have a question view on persistent for CDI. We have given it as an intraday, guys. So I guess that covers it up. So Granule 610 call bought at 15.5. Granules. 610 call bought at 15.5. So it's better to exit from the trade because, as I said, just a 5-6 trading session are left in the January session, and stock is in a consolidation from last so many days, right? So not a much momentum expected here. Stock जो option है उसमें decay हो सकता है, तो better आप exit कर दे इसे. So Zomato seller hold. Even the Anuj, before that, मैं persistent के बारे में बात करना चाह रहा हूँ. Around 6160 के आसपास हमने इनिशिएट किया था. तो 40 पॉइंट का स्विंग इसमें भी देखने मिला है. तो इसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो. अभी भी 30-40 पॉइंट का स्विंग इसमें भी आया है. तो यू कैन बुक द प्रॉफिट इन परसिस्टेंट एज वेल. इन्फो एज का नौकरी का हमारा टारगेट हिट हुआ है और 30-40 पॉइंट का स्विंग हमें इसमें भी देखने मिला है परसिस्टेंट में. So for intraday purpose, you can book the profit in both the stocks now. Right, we're talking about the Zomato, right? Yeah, stocks is almost down by more than 20% from its recent high, that is around 304. And from there, it forming a low top, lower bottom on a bigger time frames like a monthly as well as one a weekly time frame. But the good part, it holding its immediate support that is around 200 level. And वहां से हमने फिर से एक bounce back देखने मिला है towards 220 level. So for if you taken the Zomato for a long term purpose, yes, आप इसमें बने रह सकते हो. और आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो ट्राई टू एग्जिट ऑन द बाउंस. बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो यू कैन सी द टारगेट टुवर्ड्स अगेन इट्स रिसेंट हाई दैट इज 300 एंड देन 350 400 लेवल. एंड अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए फिर से बाय भी करना है तो यू कैन बाय अराउंड 210 220 लेवल. यहाँ पर आप फिर से ऐड भी कर सकते हो. Sir, RK4 bought at 900. So आपके फोर्स के बात करें तो forming a low top lower bottom on a daily chart from last almost 5 session, but stock is able to hold its 200 EMA as of now. अगर
880 के नीचे क्लोजिंग होती है तो शायद थोड़ा सा और करेक्शन हमें इसमें देखने मिल सकता है, राइट। एंड इमीडिएट अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 860 का इमीडिएट almost all the PSUs are forming a lot of one the bigger time frames and seen some correction from the upper levels. सो इवन द गेल का आप चार्ट देख सकते हो, थोड़ा सा करेक्शन दिखा रहा है ऊपर के लेवल से और सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा घूमने की कोशिश कर रहा है। सो 170 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यू कैन बाय अराउंड 170 165 लेवल फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 185 190। Sir, SBIM. So talking about the SBI, it has a taken the resistance around 200, जो इसका earlier इसका support रहा करता था, but on 6 Jan it broke on the 200 demand close below the same, but that earlier support is acting as a resistance for the SBI now. So it will be trading in a range, right? Structure wise weak ही लग रहा है. You can buy around 720 is a strong support zone for the SBI. You can buy around 720 for the 40-50 rupees momentum. Sir, ICICI ARPU. ICICI Pro, sorry, not ARPU. I'm thinking of something else. 30 Jan call 620, bought at 2.80. What which call? Strike 620. 620. So it's better to exit from the trade, right? So 5-6 दिन ही बचे तो यहाँ पे काफी मोमेंटम लग नहीं रहा है पे हमें और स्टॉक का स्ट्रक्चर भी काफी वीक ही है यहाँ पर। It's better to exit from the trade. Sir, BSE for short term. Yeah, BSC का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इवन स्टॉक इज ट्रेडिंग इट्स लाइफ टाइम हाई लेवल, राइट। सपोर्ट से काफी हमें हर बार इसमें बाइंग देखने मिलती है। 3 दिन के फॉल के बाद स्टॉक अगेन इट्स स्टार्टिंग इट्स अप ट्रेंड। सो फॉर अप शॉर्ट टर्म इट विल बी टच अराउंड 6200 इन शॉर्ट टर्म। सो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो बीएससी में। AB Capital for long term. तो आदित्य बिरला कैपिटल सेटअप वाइज काफी वीक है, राइट। You can see stock is not able to surpass its lifetime high which was made in 2017 और वहां से काफी स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग देखने मिली है। इट इज अराउंड 244 लेवल। 244 से स्टॉक इज डाउन by more than 40% now and forming on even the monthly chart forming a lot of lower bottoms on last 4 months. So सपोर्ट है इसका अराउंड 150 लेवल। 150 160 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां आप कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ एट द सीएमपी वी विल नॉट एडवाइज टू बाय। Sir, I started SIP in Bajaj Housing Finance, but the stock is down by 26% in my portfolio. What is your advice? बजाज हाउसिंग, राइट? Yes, sir. Okay. So it's a recently listed stock, it's listed by a few months back, and look at the weekly, monthly सब में थोड़ा correction देखने मिला है, but the fundamentals are very nice, right? तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट में ज्यादा डेटा है नहीं तो I can't much comment on the level wise, but look at the fundamentals काफी strong है। You can continue with the SIPU, or in the long term you will see the decent amount of profit in the Bajaj holdings. Sir, your view on Oberoi Realty?
निफ्टी रियलिटी में काफी हमने सेलिंग देखने मिली है इन लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन. यू कैन सी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने मिला है जो कि फेवरेट काउंटर एंड सुजलैंड में भी हमने काफी करेक्शन देखने मिली है फ्रॉम अपर लेवल्स. Stock is trading near its support zone. So 50, 52 is a strong support zone for the Suzlon. For long-term purpose, you can buy around 50, 52 level. In maybe in coming months and coming years, you can see the momentum towards 80, 90, and above 100. So this will be the last query for the day. View on IOB. Post results, we have seen some momentum in the PSU, small PSU banks. And if you look at the यहाँ पे शायद रिजल्ट आया था इसका स्टॉक was almost up by 18-19%. I guess कुछ न्यूज भी था गवर्नमेंट का. सो सेटअप वाइज कंसोलिडेशन फेज में है चार्ट. सपोर्ट के आसपास जो बाइंग देखने मिलती है 45 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन. बट कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे लग नहीं रहा है. मोमेंटम विल क्रिएट अबव 55 लेवल. तो किसी को बाय करना है तो एक तो 55 के ऊपर बाय करे या तो सपोर्ट पे बाय करे. 55 के ऊपर में बाय किया तो इमीडिएट में आपको एक 4-5 रुपए का मोमेंटम देखने मिलेगा. या तो ट्राई टू बाय अराउंड सपोर्ट दैट इज 45 लेवल. Guys, that will be all for today's morning session. Thanks everyone for joining in. We have three more sessions today: 11:30 a.m., 2:30 p.m., and 6 p.m. So don't forget to join in. And tomorrow we have five sessions: the morning session, the 11:30 a.m. session, 2:30 p.m. session, 4 to 5 knowledge session, and then 6 p.m. we have commodity session. That will be all. Thanks a lot, everyone. Thank you, Madhu sir. Yeah, thank you.